Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Global World Computer. In the last video, we will learn about the where clause and how to filter data using conditions. And today we are going to learn something very interesting: order by, distinct, limit, and offset in SQL. So these four are very important when you want to sort data, remove duplicate, or fetch only a specific number of rows. So let's get started. So first, order by. So let's talk about the order by clause. Order by is used to sort the result set in ascending or descending order. So by default, order by sort data in ascending. If you want descending order, you can use DESC descending. So let's take an example. Suppose we have a table name student details with some columns like student ID, first name, last name, date of birth. So if I want to sort student by their age in ascending order, so I will write first use database which is already created. So use LNCT and I write this query select star from table name student details and order by date of birth and run. So now this will give the youngest student first and the oldest at the bottom 2001 and 1998. So let's now if I want the opposite order descending by as, so I will write select star from student details order by date of birth and DESC descending. Second, distinct. So now let's move on the distinct keyword. Distinct is used when we want to remove duplicate value from the result. Suppose in your student table, multiple students are enrolled in the same courses. If I want to see the list of all courses without repetition, I can write select distinct. Select distinct course name from table name is courses. So let's see. तो यहाँ पर वो कोर्सेज के नेम आए हैं जो कि रिपीट नहीं है और जो भी कोई भी एक स्टूडेंट एक कोर्स लेकर रखा है, ठीक है। तो अगर इसको मैं मल्टीपल टेबल्स के साथ कनेक्ट करूँ तो उसके लिए मुझे ज्वाइनिंग सीखना पड़ेगा। ज्वाइनिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट जो हम लोग क्लाउस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लिमिट क्लाउस, ठीक है। तो लेट्स नाउ अबाउट लिमिट क्लाउस. Limit is used to restrict the number of row written via queries. This is very helpful when you have a large data table but you only want to see a few records. For example, if I want to see only the first 5 students, so I can write select star from table name is student details and limit 5. तो रन द क्वेरी, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ वो रिकॉर्ड शो हो रहे होंगे जो 5 है। 10 रिकॉर्ड से टोटल यहाँ पर, बट मैंने यहाँ पे लिमिट 5 का यूज किया है, तो मुझे यहाँ पर रिटर्न ओनली 5 रो. तो नाउ इफ आई वांट टू सी द टॉप 3 ओल्डेस्ट स्टूडेंट, आई कैन कंबाइन ऑर्डर बाय विथ लिमिट. तो आई कैन राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स नेम from student details table name and order by age and descending limit top 3 oldest student. तो now column age, सॉरी, तो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, सो डेट ऑफ बर्थ. तो लेट्स सी ये टॉप 3 स्टूडेंट मेरे पास आ गए हैं, वो जो जिनकी एज सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो सबसे कम वाली एज के उन स्टूडेंट्स का लिस्ट निकाला है यहाँ पर, तो आप लोगों को नाम दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास बचा हुआ है ऑफसेट. So now let's take the one step further and talk about offset. So offset is used when you don't want to start from the first row but from a specific position. So for example, suppose I want to see students starting from the sixth record and I want five row. After that I can write select star from student details limit 5 and offset 5. तो यहाँ पर टोटल मेरे पास लगभग 7 रिकॉर्ड्स हैं. तो 7 रिकॉर्ड्स में से मैंने 5 रिकॉर्ड्स निकालना था बट मैंने ऑफसेट में 5 का यूज किया तो 5 नंबर या 5 रिकॉर्ड 5 रो स्किप हो चुके. ठीक है. तो दिस मीन्स skip the first 5 records and show the next 2 records. And what is the difference between limit and offset? So limit decide how many row to show and offset decide from where to start. So let's another way to write the same thing is select star from student details to limit 5 comma 5. Let's run. So both queries give the same result. Here the first number 5 is offset and the second number 5 is limit. I hope you like this video. And so now we have learned order by distinct, limit and offset. So in the next video, we will cover the like operator and wildcard, which help us search data using pattern. So don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video.